Academia for Startups ku swagat. Welcoming everyone for Odisha Startup Carnival 2023's themed session on Academia for Startups. And as we talk about Odisha Startup Carnival, 2023 is the second edition of our flagship annual event, Odisha Startup Carnival. It was first held in the year 2022, and we have come up with the second edition in 2023. And it is even more bigger and larger this year in terms of its widespread across all the stakeholders of the startup ecosystem. This comprises everyone, in fact, the academia, the mentors, investors, the communities, the startups, everyone whose role is there significantly in the startup ecosystem. And thus, Odisha Startup Carnival 2023 would be a 14-day long program with various themes on all these stakeholders' engagement. तेणु तार से प्रथम पर्यायर आज आमर ये जो थीम सेशन टी रही एकेडेमिया फॉर स्टार्टअप्स एकेडेमिया फॉर स्टार्टअप सेशन पई आमर आजिर जो विषय वस्तु रही खाली I'll just shortly outline what we are going to do on the Academia for Startups today. There are two big program announcements where AIC Nalanda would be collaborating with two very prestigious institutions in order to reach out to the grassroots level innovation or innovators and turn them into good realistic startups. तापाई स्कूल और कॉलेज लेवल रे जो इंटरवेंशन टी आवश्यक रही तापाई आजिर एई एंटायर प्रोग्राम रो परिकल्पना सेथिरे प्रोग्राम अनाउंसमेंट फॉर हमर जो प्रोग्राम टी अनुचिंतन तार शुभारंभ हेबाकु जाउछि with 100 schools under the aegis of New Life Education Trust. New Life Education Trust रो officials तथा secretary श्री प्रसाद त्रिपाठी सर को welcome करछि आजिर a program पाई sir if we could have the videos also available with you and आम संगरे आगु को जाई की program announcement will have for more school with 100 colleges under the Mo College Abhijan Parichalana Sangathan, and there's an ongoing e-cell meetup in collaboration with Startup Grand Bhubaneswar today. Tenu Debashish, if we are ready, can we just have the video for the launch of Anuchintan played? Yes, sir. Yes. Thank you, Devashish. On this note, आपण माने समस्ते जो मैंने जॉइन करचंती निश्चय भाबुथुए अनुचिंतन प्रोग्राम टी कोन why have we conceptualized this at all तो तेणु टिके ता ऊपर केवल प्रारंभिक भाव ब्रीफ करिया पे because this will slowly take shape as we collaborate more and share each other's ideas किंतु I'll just in a very short try to address the outline of this program अनुचिंतन अनुचिंतन एक इनिशिएटिव जहाँकि स्कूल लेवल रे इनोवेशन को बळ देबो स्कूल पिलांक भितरे टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस को अधिक रु अधिक भाबरे तांको पाखरे पहुंचेबा को तांको ठू जनरेट करिया पे गुड आइडियाज ये गोटे इनिशिएटिव किंतु जहाँ इथिरे सबुठु इंपोर्टेंट होची कि इथिरे आमे वी हैव कोलैबोरेटेड विथ द न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट आ तांको अंडर रे थिबा सब स्कूल्स मानक सहित ए प्रोग्राम टी को धीरे धीरे वी विल enlarge it, we will try to make it more vast, but prarambhika bhabare primarily we are considering 100 schools under the New Life Education Trust where we can pilot this program. ଆଉ ए प्रोग्राम रो सबुठु बड़ विशेषत्व होची कि ये इंग्रजी भाषा रे जो इनोवेशन टिकु हमें
गोटे टाइप रे वी हैव लॉक्ड इट अप कि केवल विथ टेक्नोलॉजिकल और इंग्लिश लैंग्वेज बुझुथुबा पिला माने ही इनोवेशन लेड बिजनेसेस को बा इनोवेशन लेड एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर परिबे एटा सेही ट्रांजैक्शनल बैरियर टी को भांगिबा पई गोटे प्रचेष्टा वर्नाकुलर लैंग्वेज रे बा ओडिया भाषा रे पिला माने इनोवेशन कोन इनोवेशन रो जो सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रही छी इनोवेशन बा जोटा को हम अभिनवता बा नवाचार बोली कहि थाउ सेथिरे से माने केमती इक्विप्ड हे परिबे जदि आम डिजाइन थिंकिंग विषय कहूँ तो से डिजाइन थिंकिंग टी इंग्लिश लैंग्वेज बोली भाभी दे कि आम ये डिजाइन थिंकिंग विषय किसी जानी परिबानी एभली मनोभाव न रखी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आउ न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट संगे आरंभ करिवार विशेषत्व एया थिला जे आमे जानिछु कि गोटे फ्री माइंडेड एजुकेशन पैटर्न को डेवलप करिवारे आउ गोटे पिलार निजत्व निज विशेषत्व को गुरुत्व देबारे न्यू लाइफ एजुकेशन ट्रस्ट अंडर थिबा सह सह इंटीग्रल स्कूल्स मानकर जो प्रचेष्टा होची दैट पर्टिकुलर थिंग टू स्टार्ट विथ is a big privilege तेणु एई प्रोग्राम टिरे we will first have to train the trainers workshops after we will tell how to devise or how to create a tinker camp model और tinker camp रे what all things happen STEM उपरे IoT उपरे drones उपरे additive manufacturing उपरे robots उपरे एमती धीरे धीरे किपरि भाबरे टेक्नोलॉजी को एकेडमिक करिकुला भितरे केमती इंट्रोड्यूस करी हबो आउ तापरे से पिलांक भितरु आइडियाज जनरेट करके वी विल टेक देम इनटू स्टूडेंट इनोवेशन प्रोग्राम सो ये होची प्रोग्राम रो ओवरव्यू जे आगे इंस्टीट्यूशनली टिके वर्कआउट करके वी विल स्टार्ट सेटिंग अप टिंकर कैंप्स इन ऑल दिस 100 स्कूल्स आ तापरे भलो स्टूडेंट आइडियाज को सिलेक्ट करा जाई ताकू स्टूडेंट इनोवेशन प्रोग्राम को निया जिवो आ सेतिरे संपूर्ण ओडिया भाषा रे ही गोटे एपरी मटेरियल बा टेक्स्ट क्रिएट करा जिवो जहा कि धीरे धीरे ये करिकुलम रो पार्ट हे जिवो पिला इनोवेशन रो एटीट्यूड ता भितरे थिले डिजाइन थिंकिंग रो अप्रोच ता भितरे थिले ये गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मोर देन से गोटे स्टार्टअप करिवो कि एंटरप्रेन्योर हबो कि बिजनेस करिवो ताटू अधिक इंपोर्टेंट होची ता भितरे गोटे डिजाइन थिंकिंग रो अप्रोच आ इनोवेशन रो माइंडसेट आसीबाटा एई स्पिरिट को बल देवा पई टिंकर कैंप्स मानकर जो संरचना करा जिवो सेथिरे पिला मान को नेकी जो एक्टिविटीज हबो सेथिरु आमे तांकु तापरे स्टूडेंट इनोवेशन प्रोग्राम को नेकी तांकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आउ अन्य अन्य तांकु जहा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दरकार अछि सेति पई प्रचेष्टा करा जिवो आउ जेतु की गोटे प्रोग्राम बिगिनिंग रे देयर इज ऑलवेज वी सेट एम्बिशियस टारगेट्स आमे 100 स्कूल्स रु 1000 इनोवेटर्स को ट्रेन करबा को चाहूछु व्हिच वुड देन जनरेट मोर देन 500 आइडियाज and then eventually over the period of time जेतेबेले से माने इंटरेस्टेड हेबे जेतेबेले से मान को पाखरे जथेष्ट रिसोर्सेस थिबो at least we require कि 100 schools रु 50 स्टार्टअप्स भलो स्टार्टअप्स डेवलप होतु आउ ए थीम आउ ए आइडिया सहित we are starting today's program I congratulate as well as thanks the entire team of New Life Education Trust and विशेष करके प्रसाद त्रिपाठी सर को कि he readily agreed कि we should be collaborating and doing this तेणु आपण माने समस्त जो माने जॉइन करचंती thank you so much for today's this meeting joining this meeting and getting over this call एथि सहित मो कथा को विराम देबी and I will request Shri Prasad Tripathi Secretary New Life Education Trust for his kind address. Sir, you are on mute. I'm audible. हाँ sir, audible. आगे thank you mo Nalanda Institute of Technology Foundation এবং অটল ইনকুবেশন সেন্টার এই উদ্যোগী মানকু স্বাগত করছি আমার সংস্থাকু এবং আমার সংস্থার মধ্যে নিউ লাইফ এডুকেশন ট্রস্ট जो भाई भणी माने मीटिंग रे अछंती समस्त को स्वागत करूची आदरणीय भौणी माने এবং श्रद्धेय भाई माने ये गोटे नुआ इनोवेटिव वर्क एक्चुअली आम संस्था मानकरे जो माने जोग देइछन मीटिंग रे এবং जो माने आम संस्थार एबे नुआ ही जोग दोचंती नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो भाई मान को मुझे सुनिया सच्चे चाहे जे हमरो बेसिस होची स्पिरिचुअलिटी हमें दो वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन
and technology also, but our basis is spirituality, and spirituality is a very vast subject. So we can accommodate any proposals throughout the globes. ଯୁଆଡୁ ଯୋଉ proposal ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ if it suits us, not only ଆମେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଆମେ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମେସେଜ ହଉଛି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ ଯୋଗଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଡିଲି ଆଗ୍ରି କରିଗଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆହବ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ସେ ଇନୋଭେଟିଭ ୱାର୍କକୁ ଆମେ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାରର ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିପାରିବୁ, ଏବଂ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ମେସେଜ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ବି ଥ୍ରୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଓନ୍ଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଲେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ଅର୍ଥାତ ଓଡିଆ ଆସିଲେ ବସିଥିଲୁ କେତେ ଜଣ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୁଟ୍ସ ଆୱାର ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଆମ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଦି ୱାର୍ଲଡ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉଛି, ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରେଡିଲି କୋଅପରେଟ କରିବୁ, ରେଡିଲି କରିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋପ ହଉଛି ଅପ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ 12, ଯେହେତୁ ଅପ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ 12 ଆମର କ୍ଲାସ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି କ୍ଲାସ 8 ରୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପ୍ରାୟ 100 ସ୍କୁଲକୁ ଆକୋମୋଡେଟ କରିବାକୁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ବେଶୀ ହବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 8ଟି 10ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ଲାସ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିବୁ। ଆମର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏକ୍ସିବିସନ, ସାଇନ୍ସ ଡିସ୍କସନ, ସାଇନ୍ସ ମଡେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଇନୋଭେଟିଭ କାମ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ଟୁ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେବେ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଆମେ ତ ଇମିଡିଏଟଲି କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ 1000 ପିଲା ବାଛିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, 1000 ପିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି, କାରଣ ଆମର 100 ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଅଛି 1000 ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛି ପାରିବା। ତେଣୁ ସେ 1000 ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ 1000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆହୁରି ବି ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିବେ କି ଆଉ ଯେ କାହାର କିଛି ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କାମ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଆଇଡିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣମାନେ ଇନୋଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋରଲେ ସେମିତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଓନ୍ଲି, ବହୁତ କଥା କରିବାକୁ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଭାବିବାକୁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, already there are many teachers deeply involved in these works, ଯଦିଓ ତାର ନାମକରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏୟା ନୁହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ନାମକରଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ they are very much in the work and they can definitely join and cooperate in your activities. ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି এই ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗେଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ, ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ, ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ୟାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି
जो भाई निजे उपस्थित अच्छा समस्त को हार्दिक श्रद्धा शुभेच्छा और कृतज्ञता जनाऊँ समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर with all your good wishes and definitely with under your guidance and leadership we'll be able to formulate this program really well and jaha expectations rahichi amar outcomes ku neiki taku madhya ame nishchay achieve karibu we have this belief and jo mane bhi aji join karchanti semanka pai this is a very primary information that something of this sort is going to happen and dhire dhire as we in somehow build up the entire framework how to execute this program we will reach out to every integral school so that we could just go through their strengths and their opportunities available jaha phalare ki pila mankar selection kariwata am pakre सहज हो जिवो आ जो माने राइट टैलेंट रहिचंती सेही मान को ही आमे आगु को नै कि प्रोग्राम टी को प्रथम पर्याय रे आरंभ करि परिबो ए विश्वास रहिछि आपण माने समस्त जॉइन कले शॉर्ट इनॉग्रल प्रोग्राम टी पई एथि पई बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much we will take a pause here and then we'll resume for the next part of the program thank you so much the next phase of the program is the announcement of the Mo College campaign at all the colleges under the Mo College Abhijan. However, the guests would join in a few minutes. Meanwhile, we'll take जदि कहार किछि एबे जो माने अछंती तांकर जदि अनुचिंतन कार्यक्रम को नै कि कोनोसी प्रकार क्वेश्चंस अछि किछि सजेशंस अछि किबा कोनोसी प्रकार शेयरिंग अछि ताले प्लीज अनम्यूट करके आपण कहि परिबे किछि भी आपण को पचारिवार अछि बुझिवार अछि कि आपनकर आ कोनोसी विशेष प्रकार रे एडवाइस किबा सजेशंस अछि प्लीज फील फ्री टू से गुड मॉर्निंग दुर्गा आई एम ऑडिबल yes sir you are audible please अमरेंद्र फ्रॉम मातृभवन एक्चुअली आप टारगेटेड एज ग्रुप कोन सर आउ थरे प्लीज आपन को वॉइस टिके ब्रेक कर आपनकर टारगेटेड एज ग्रुप सर टारगेटेड एज ग्रुप सर
class 7 to 10 पर्यंत better. Even 11 and 12 जोठी थिबो there also we can scout out कि सेही पिलांकु नेबाटा, but 7 to 10 class रो पिलांको पई एटा better काना से माने relate करि परिबे with the applications that they can put in the education itself. ओके थैंक यू आ गोटे होची आपण आ कोठी इंप्लीमेंट करछन के प्रोग्राम आज्ञा I am myself actually part of the national task force for this vernacular innovation program जोथिरे पूरा 22 टा लैंग्वेज जहा रहिछि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रहिछि हमरो सेथिरे ए प्रोग्राम टीरो ड्राफ्ट आउट हेतिला. It was through Atal Innovation Mission Niti Aayog au IIT Delhi. So the content was then given to each of the participating incubators ba jo sabu task force members thile ki apan mane eta nije nijo nijor region रे implement करिवा को चेष्टा करंतु, and then they would formulate it as a national integration program जहाँ भी बहुत शीघ्र अनाउंस हवा को जाउची. We started it in doing in Atal Tinkering Labs. मु जानि छि बहुत गुडा इंटीग्रल स्कूल्स रे मध्ये ही Atal Tinkering Labs रहिछि. तेणु आमे अटल टिंकरिंग लैब्स रे तो यार फर्स्ट पायलट रन्स किछि डेमो सेशंस आगे करिथिलु आ सेथिरु मध्ये किछि भलो आइडियाज आसीया फल रे तांकु मध्ये सपोर्ट करा जायछि अन्य प्रोग्राम मान करे. ता छडा आमर एठी एई अटल इनक्यूबेशन सेंटर आमर जो इनक्यूबेशन सेंटर रहिछि स्टार्टअप्स मान को पई सेठी प्रत्येक शनिवार फॉर सीजन ऑफ 10 सैटरडेज आमे स्कूल पिला मन को डाकू एठी की अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स आ टिंकर सैटरडे नाम रे गोटे प्रोग्राम अछि जोटा हमर चले जोथरे की पिला मन को इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज टिके डिजाइन थिंकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडस्ट्री 4.0 सहित इंटीग्रेशन आ आइडिएशन कंपटीशंस वगैरह करके हमें वी क्लोज अप दैट सेशन. यार भी गोटे बहुत बड़ा इंपैक्ट रही छि काइना आमे देखिलु कि सेथिरे गोटे ब्लेंड हे जाय कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स तांकर थॉट प्रोसेस तांकर अप्रोच टुवर्ड्स all these things ये चेंज हे जाय. बट नाउ वी थॉट कि गोटे परफेक्ट सैंपल साइज को नै कि प्रोग्राम टी को करिवा बेटर रहबो कारण देन यू कैन आल्सो मैच अप विथ द एकेडमिक कैलेंडर पिला मनकर बाकी करिकुलम भितरे याकू स्थान देबा. तेणु हेंस इट वाज थॉट कि why should we do with it a large chain of schools. तो वर्नाकुलर लैंग्वेज रे जते बेले हमें को करिवार ही अछि ओडिया लैंग्वेज रे द राइट चॉइस. इनफैक्ट मी एंड माय कॉलीग देबाशीष एंड मानस we all sat together and we thought that we would start it with New Life Education Trust. So this is how the genesis of this program was. दुर्गा आई एम राइट एबे पर्यंत एक्चुअली कोठी स्कूल रे इंप्लीमेंट हेइनी आपण माने भुवनेश्वर रे आपण प्रोग्राम ता करछन. दैट इज राइट. And भुवनेश्वर रे पांचटा स्कूल्स रे हाँ मु ऑडिबल अछि आगे कोंतु. हाँ भुवनेश्वर रा पांचटा स्कूल्स रे वी स्टार्टेड इट माने जस्ट टू पायलट इट फर्स्ट कि केमती रेस्पॉन्स रहउची पिला माने कंटेंट को नै कि केते फ्रेंडली अछंती. ए प्रोग्राम टी पांचटा स्कूल्स रे हेतिला. तापर एट अ लार्जर स्केल 25 टा स्कूल ऑल अक्रॉस ओडिशा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रे स्टार्टअप ओडिशा रो जो प्रोग्राम टी ओडिशा स्टार्टअप एक्सप्रेस चलथिला ता अंडर रे थिबा 15 टा स्कूल रे आउ ता पूर्वरु आउ थरे लास्ट ईयर 10 स्कूल्स रे. तो 25 स्कूल्स रे वी हैव ऑलरेडी डन इट जे सेटा केवल वन डे टिंकर कैंप हिसाब रे हेतिला गोटे पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोसेस ऑफ स्काउटिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज सेही क्षेत्र रे एटा प्रथम हम स्टार्ट करिया को जाउछु. एग्जैक्टली मु से जाने चंती जे ए प्रोग्राम एक्चुअली पायलट प्रोग्राम हिसाब रे ए स्कूल एनएलटी अंडर जो स्कूल अछि से स्कूल मानकर चलियो. दैट इज राइट. हां तेनो बेसिकली हम जहा काम करबा सेटा होची हम करिकुलम भितरे बा स्कूल टाइम भितरे कारण गोटे 1 डेज और 2 डेज भितर प्रोग्राम की 7 डेज प्रोग्राम रे जो बली आउटपुट मिलिया कथा मिलिबोनी सेति में स्कूल करिकुलम रे ही याको पुरेबा को पड़िबो. आज्ञा ताको नै कि जहा आइडियाज अछि जे स्कूल करिकुलम कारण आमे जते बेले स्कूल करिकुलम करूछु सेते बेले हमर भी किछि प्रोग्राम अछि ताको भी ता संगे कोप करिया इट इज डिफिकल्ट जॉब. तनो प्रोग्राम टे एक्चुअली जानिया दरकार या आपण कोन आइडिया केमिति पुरै परिबो करिकुलम भितर कारण हम भी श्रोविंद गोटे विज्ञान परिषद अछि हमर कला परिषद अछि ताको हमें ता धरे भी काम करबा इट इज टू डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ कोर्सेस ऑफ स्टडीज रो प्रेशर अदर थिंग्स. एटा को केमिति आपण आइडियाज करूछंती जे करिकुलम भितर पॉसिबल पुरै हबा एवं करै हबा
एटा टिके आपण डिटेल्स पढे तो निश्चित कहिबे किंतु ता पूर्वरु जो माने अभी चिंता करिवे तांका पाखरे किछि हैंड आउट रहया दरकार सो दैट दे थिंक अबाउट दिस थिंग हाँ तो सेई एई जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टा दरकार अछि बा कंसल्टेशन टा दरकार अछि ता पई ही वी विल फर्स्ट इनिशिएट अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स जोथरे कि आपण समस्तंकर सजेशंस दरकार कि हाउ कैन एंड एट व्हाट पेस केते जल्दी केते क्वांटिटी रो मटेरियल केते टाइमिंग याकू प्रोवाइड करी हबो हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस इनटू द करिकुलम ये सब सजेशंस पई देयर विल बी अ फ्यू वर्कशॉप्स जोथरे कि फर्स्ट जो माने याकू इंप्लीमेंट करिवे ऑन ग्राउंड सेई मानकर भलो से ओरिएंटेशन हेई परिबो एंड आई बिलीव कि वी विल बी एबल टू मेक इट आउट काइना देखंतु जदि हमें केवल भाबिबा कि याकू गुटे सब्जेक्ट हिसाब रे नै की करबा दैट इज नॉट पॉसिबल आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि जहां करेंटली एजुकेशनल स्ट्रक्चर रही छि बा एकेडमिक सब्जेक्ट को नै की करिकुलम रो जो फ्रेमवर्क टा रही छि ता भितरे आउ गुटे जिंस इंसर्ट करबा इज अ ह्यूमंगस टास्क सेटा आई कंप्लीटली एग्री विथ यू बट देयर कुड बी सर्टेन इंटीग्रेशंस वेयर आमे जो जिनसटी को ऑब्जेक्टिवाइज करबा को चाहूछु ता सहित आको अमेलगेमेट करबा आको सेपरेटली नै की करला माने हमको एकदम स्ट्रक्चर भितरे बहुत बड़ा चेंजेस आनिबा को पड़िबो व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट तेणु कैन वी डू इट एज अ मंथली एक्टिविटी और इनिशियली एज अ क्वार्टरली एक्टिविटी की किछि करिकी वी हैव टू सी कि जो माने को इंप्लीमेंट करबे प्रथमे तांकर ओरिएंटेशन आउ को धारा रे करबे को चैनल रे करबे को सब्जेक्ट सहित आकु नेला माने एटा बेटर हबो एई जो ब्रेनस्टॉर्मिंग बा कंसल्टेटिव प्रोसेस टी दरकार अछि ता पई वी विल बी पुटिंग आउट दिस वर्कशॉप्स व्हिच वी विल लेट यू नो वेरी शॉर्टली भाई नमस्कार नमस्कार भाई आपण ए जो जो पिला मानक जो सिलेक्शन करिया पई जो भाबिचंती आपण कोन प्रति स्कूल को आसीबे प्रथमे तो आमे स्कूल मान को अप्रोच करिबु कि सेमानकर जो फैकल्टीज अछंती बा स्टाफ अछंती सेमान को सहित जहा हम कहउतले समरेंद्र भाईकर क्वेश्चन रो आंसर है कि जो सेमान को आगे ट्रेन करिया पई तो तापरे जो स्कूल्स गुडी को सिलेक्ट हबो दैट राइट वी कीप रिजर्व्ड विथ एनएलईटी सो दैट दे टेल अस कि हमें केमिति स्प्रेड आउट कला माने केउ को 100 स्कूल्स को बाछिला माने प्रथमे वी कैन एक्चुअली स्प्रेड आउट अक्रॉस ओडिसा आ पैन ओडिसा प्रेजेंस टी रहिबो केमति याकू वीव आउट करबो भलसे देन इन ऑल दिस 100 स्कूल्स जो माने आसीथिबे एज ट्रेनर्स बा पार्टिसिपेंट्स बा फैकल्टीज सेमान को हमें गुटे टिंकर कैंप किपळी ऑर्गेनाइज करा जे से भई से क्वाज तो ए टिंकर कैंप जेबे जेबे जो जो स्कूल रे शेड्यूल हबो आर एक्सपर्ट्स वुड बी देयर तेणु प्रत्येक टी स्कूल रे गुटे टिंकर कैंप हेबाटा इज अ मस्ट तो 100 टिंकर कैंप्स वी विल हैव बट पोस्ट दैट टिंकर कैंप कोन एक्टिविटीज रहिबो सेटा सेही लाइन ऑफ डिलीवरी टाको डिसाइड कला परे स्टूडेंट्स मानकर सिलेक्शन हबो धन्यवाद हेलो हाँ हाँ भाई कोन I am Kitish from हेलो सर गुड मॉर्निंग Srirabindra Rautela School, Rautela. हमें वर्तमान गोटे गोटे सुंदर अटेम्प्ट आपण आउथरे इनिशिएट करूछंती अतीतर आमे देखिछु अटल टिंकरिंग कैंप लैब माने ऑलमोस्ट बहुत स्कूल रे हेची किंतु व्हाट इज माय एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली वी नेवर यूज द लैब in its true spirit बर्तमान पर्यंत आमे तामे यूज करने आ गोटे जगह समरेंद्र भाई कहले जे हमर शिवेंद्र विज्ञान परिषद अछि एवं अन्य विभिन्न परिषद अछि वी आर वर्किंग बट इन आवर स्कूल एंड मेनी ऑफ आवर स्कूल माय एक्सपीरियंस दैट वी एक्चुअली fail to do really scientific researches or scientific works that students should undertake. Problem is that the very basic suggestion that I would like to give you that जे आमे स्टूडेंट्स मान को भितरे एवं स्टूडेंट्स जो टीचर्स माने साइंस पढौछंती तांकर भितरे गुटे इंटरेस्ट हमें क्रिएटिव इंटरेस्ट क्रिएट करवा लागि वी आर फेलिंग मु आम स्कूल रे विज्ञान रो टीचर मान जो छन ताको बहुत रिक्वेस्ट करथिले शिवेंद्र विज्ञान परिषद माध्यम रे आपण माने सर्टेन प्रोजेक्ट्स माने नियंतु किछि एक्सपेरिमेंट करंतु पिला मान को
जे गुटे इंटरेस्ट क्रिएट करंतु बट somehow it could not be made. So this is my request you to बाकी सब आपनकर प्रोग्राम एवं जो मेथड्स करिसंती इंप्लीमेंट करवाली फाइन, किंतु प्रायर टू दैट please see that माने जे creative interest must be aroused in the minds of young students of our schools, in almost all schools. That is first. Once the students मान को भितरे interest यदि create हला towards science, to know something beyond जानिबा लागि तले चेष्टा करिवे, then only we will do everything very successfully. नहले आमर एमते प्लानिंग करिवा, एमते विभिन्न प्रोजेक्ट्स करूथुबा एवं मीटिंग्स होउथबो सरी जाउथबो. तेणु मो रिक्वेस्ट हला जे आपण देखंतु केमती करले 4-5टा जो टिंकरिंग कैंप माध्यम रे प्रथमे आमे यंग पिला मान को तामने एटलीस्ट तामने एमिति एम्बियंस क्रिएट करिबा त ताकर भितरे से जिंसटा इंस्टिंक्ट हे जिवो, इंस्टिंक्ट जागरण हबो, सेटा फास्ट कर. दिस इज माय सजेशन. बाकी बढ़िया अच्छे टिंकरिंग कैंप माध्यम रे ये करी के ये करबा, दैट इज ऑल राइट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ता माने क्या, हाउ टू क्रिएट द क्रिएटिव इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. सेतरे टिके आउ टिके चिंतन कले भलो होंता. थैंक यू. I completely agree with you. In fact, आमे जो ATLs मान को संगे भी काम करछु for last 3 years, आमे भी देखिछु कि that is a big gap which you rightly pointed out. बट सेति पई आमे चाहिलु कि जो माने स्टेक होल्डर्स, जो माने इंप्लीमेंटर्स, जो माने ग्राउंड लेवल रे याको एग्जीक्यूट करिवे, सेही मानकु टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस सो दैट वी हैव अ कंटिन्यूटी एंड अ वेल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. तो याको एज अ लार्जर आउटरीच हिसाब रे वी स्टार्टेड conceptualizing this idea. And as you rightly said कि जोटा existing infrastructure अच्छी by institutional setup रही ताकू ही यूटिलाइज करके कले जिनसटा स्मूथली पेनिट्रेट करि परिबो एंटायर सिस्टम भितर को. जदी ऑल टुगेदर आमे गोटे नुवा अप्रोच, नुवा सब जिंस करके जदी ताकू ता भितर केवल ताकू बंडल आउट करबा, ताले इट डिफिकल्ट हबो. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू एंड दैट इज हाउ वी आर थिंकिंग माने डिजाइन दिस एंटायर प्रोग्राम. ओके, थैंक यू. दिस विल बी वेरी सक्सेसफुल. भाई आ गोटे कथा, is it concerned only to the science, not to other no not necessary. आमे सोशल देखो इनोवेशन केवल जे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नो, सोशल इनोवेशन भी हे पारे. गोटे पिला गोटे प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट मॉडल टे वर्कआउट करि परथो, सेटा ही होची लक्ष्य. I could see Mr. Agasti Narayan, you are unmute if you want to say something. Okay. भाई नमस्कार. नमस्कार. प्रोग्राम टा विषय मुझे प्रथम जॉइन कर पाली हला बहुत भल कथाटी मुझे बेसिक कथा गुड़ा क्लियर हो पारनी जे कौन यार उद्देश्य लक्ष्यटा जहाँ अनुमान करुच्ची आमको पिला भितर गोटे साइंटिफिक एटीट्यूड ग्रो करवा और गोटे इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने विभिन्न प्रकार काम विद्यालय स्तर में करने पड़ो. आटा तो आम करुचु किंतु ताको टिके यथार्थ ढंगरे कले जमी पिला माने आगु आगु जाई परिबे सेतिकी सपोर्ट दे पारुनी. आम अनुष्ठान मान जो छोट छोटे अनुष्ठान अच्छी से कथा संभव हो पारुनी. तथापि या भीतर गोटे आगु नबा कार्य आरंभ करबा दिगरो भल प्रथम आज्ञा. आज्ञा भाई, थैंक यू सो मच. हाँ, गीतांजलि दास मैम, if you want to say something.
हेलो हेलो हाँ सर कुहतु सर नमस्कार खलिकोट गंजाम रू कहूँ आज्ञा सर आमर लैब अच्छी अटल टिंकर लैब अच्छी किंतु आमर ताको ऑर्गेनाइज करिया फैकल्टी मैम पाना आपण साइड रू हमको के फैकल्टी जोगे परियो कि टिके मो कथा सुबिला कि सर हेलो हेलो सर वॉइस टिके ब्रेक हैला आपनकर आउ थरे टिके रिपीट हाँ करियो सर आमर लैब टा अच्छी अटल टिंकर लैब अच्छी हाँ आ द्वितीय होची आमर टिके फैकल्टी मेंबर माने ताको ऑर्गेनाइज करबा पई समस्या होची एक्जेक्ट को लाइन रे कोन सब से इंस्ट्रूमेंट उडा भी गवर्नमेंट रो आछि नहीं नहीं खाली आपनकर नो एटा एटा गुटे भारी माने well identified gap in the system ame janichu ki it is mane being difficult for the ATLs to run the training programs and utilize all the equipments with them ame we will joti joti school re ATLs achi we will take a preference ki tankara sei jinsa ta bi heal out ho so that you are well adapted into the system ame almost we are working with all the ATLs in Bhubaneswar ame sei as a larger फंक्शनरी ताकू एटीएल्स जो टीम रही हमर नीति आयोग अंडर रे तांको संगे रे मध्य वी हैव कोलैबोरेटेड एंड वी विल सी दैट आपनकर एटीएल ऑपरेशंस विल आल्सो रन स्मूथ अंडर दिस प्रोग्राम आ कंटीन्यूअस के फैकल्टी मेंबर हमको जोगे हबनी सर कंटीन्यूअस फैकल्टी मेंबर तो देई हबनी बट कंटीन्यूअस एक्टिविटी एंश्योर करियो ठीक अछि rather जदि आपनकर समथि इंटरेस्टेड पीओसी बा फैकल्टी किए थिबे we would prefer to train them out so that we can directly reach out to them ओके ओके so Gitanjali Das ma'am आपनकर raise hand अछि if you want to ask something okay so Roshan are we live with the ESL meetup room Roshan, if you we can just reset the camera and have all other students also onto the screen. Yes, thank you. So voice is stream. Yes, the voice is clear. So good morning and namaskar to everyone for this program announcement that we have been long waiting for to work with the colleges across Odisha. And with a well collaboration with the Mo College Abhijan, it has become really big. And we are starting out this program. Before we could have a formal announcement to this program, I would like to say about today's theme a little bit more.
And that is what is related to the Odisha Startup Carnival, under which today we are meeting for the ESL meetup as well. So this is to move the entire academic ecosystem in the state of Odisha and to bring on these stakeholders to the platform of Odisha Startup Carnival, where academia, in terms of its faculties, resources, and students, primarily those who are very significant and important to the center idea of this all initiatives, are taken together, and then we would discuss the further roadmap, that how would we have good student entrepreneurship based startups also coming out from the academic institutions across the state. In this phase-wise development that is going to take place with both the programs being announced today, I would just like to share a few of the ideas today. So as you all know, today for Odisha Startup Carnival is happening for all 14 days, and we are there with themed sessions every day. So today's theme was based on academia for startups, under which three programs or three verticals have been identified and being executed today. That's the first one, which we did at the first part of today's gathering. That was the program announcement for Anuchintan, which is a design thinking innovation based program which would run under 100 schools under the aegis of New Life Education Trust. The second announcement for today would be the More College campaign and the More Startup campaign at 100 colleges under the More College Abhijan Parichalana Sangathan, and then the ESL meetup, which is happening in collaboration with Startup Grand Bhubaneswar. So before we start with this, can we just have the video played? Debashish, if we can have the program announcement video played. Thank you. And just to outline on what this program would be, I'll share the screen. So More Startup isn't the first program that we are begin with this edition. We had earlier done it with the Biju Patnaik University of Technologies, and I believe many of the ESLs who were part of this also then would know that how the More Startup program was run in various colleges. In fact, 5 colleges under the aegis of Biju Patnaik University of Technology, and how this More Startup program culminated into a pre-incubation program of Idea Nest, and we had a few startup stories also coming out of it. One of which also was given incubation support under this incubation center of AIC Nalanda. So the More Startup program, which would be there in the colleges, would be basically on the outline of giving or empowering the colleges under the More College Abhijan Parichalana Sangathan, which you all know is a premier program and a mission under the state of Odisha, under the government of Odisha. And this program announcement that we are making today is in collaboration with More College Abhijan. I am told that the chairman would be joining in a few minutes, but however, we will take the conversation forward. This program will have an boot camps at all these colleges,
And as we do this boot camp, the primary objective would be to set up a startup cell in all these colleges, which would be basically governed by the e-cell wherever they are present, and where they are not, it would function directly under this program. And then from the startup cells, with a regular engagement of activities, we would be selecting out a few ideas every phase and every season. They would be then taken into the pre-incubation program for further nurturing and promoting the ideas that they are trying to build. And under this pre-incubation program, we would try to formalize and generate the ideas and develop these ideas into good startup ideas. So that's where the program overview is, and the possible outcomes that we are ambitiously looking forward is to work with 100 colleges, encompassing 5,000 participants, creating 100 startups, and thereby 500 opportunities of jobs. So this is where this entire idea of the Mo Startup campaign or the Mo Startup program with Mo College Abhijan work with. We would soon link up to the chairman as he joins. Meanwhile, if the team out there in the ESL meetup, if they would like to have any of the students share something, or if they have any questions, or would like to share that how are their e-cells functioning, then we will take the discussion forward. And let me tell you, we are also joined by many of the head of the institutions from schools under the New Life Education Trust, the Sri Aurobindo Integral Education Schools. So if we could all come together and discuss a few points on the innovation and entrepreneurship capabilities of our academic institutions. Can we have any member from the e-cells sharing how are they doing, how are their e-cells or startup cells or IEDC centers, whatever framework they have, how are they functioning? If anybody would like to share some light on that. On mute, guys. Sir, is this audible? Yes, Hello. you are audible. If the one who wants to speak can come a little forward near the laptop or something, we'll be able to hear him as well. Yeah, so that we can able to see you also. Thank you. Hello, sir. I'm Rahul Singh. I'm the assistant coordinator of the E-Cell of Kids School of Management. And the club, the E-Cell club, which is in, Kids School of Management, it's a new club. And we are starting up with much more events. We are conducting Pitchers Battlefield, where 15 to 20 participants from different schools of Kit University are coming, and they're pitching their startup ideas, as well as those who are being selected. They are being given uh, investments through Kit TBI, and we are facing a lot of challenges in order to increase this entrepreneurship culture in our colleges. So we are in a collaboration with Startup Grind. Startup Grind to promote entrepreneurship in colleges. So I too want, help from more Odisha. More startup, so that they can come and they can have an event, so that this culture increases day by day. So what are the challenges you think that the e-cells would be facing in order to run their operations or activities in the institutions? Anything particularly you have figured out? Lack of participations, lack of further knowledge about startup. Uh, Lack of participation is the main challenge which each and every ESLs might be facing. There are, at least one or two people only who are much more interested. But in order to do something big, we need more participants. We need more people to work with us. So this is the main challenges each ESL might be, and we are facing.
Okay. No, that's something we understand is a serious thing to deal with, but I think with collaborative approach and resources that we want to place with the e-cells, we'll be able to heal this out. Any other participant want to share anything? Good morning, sir. I'm Swastik Naik from Silicon Institute of Technology, Bhubaneswar, and I'm a part of ED cell, that is Entrepreneur Development Cell of Silicon Institute of Technology. And the challenge that we are facing right now is the entrepreneurship culture. Many of us are technically sound, but what we think is that if we get job and any kind of those jobs, then we'll be happy in our life and we'll just perish at the moment. But the thing is that if we have to sorry, Please go ahead. yeah. So we need to we have to give the awareness that what is startups and how you can be beneficial through those plans and those things. So I need some valuable inputs from you. Definitely. I think today also we have a conference roundtable where we will be taking up all these issues, and I think we'll make out great results out of Okay. And talking about my EDSL team, we're also organizing an IIC regional meet on 18th of this month. it. Yes. So, sir, those as we are not we don't have this culture of startups, but we are planning to do such kind of things so that we can give the motivation to those developing ideas, brains. True. Thank you for sharing all these ideas. Thank you. Thank you, sir. We'll discuss on each of these items separately. I think during the conference we will take the similar points, so I'm not for the sake of repetition making it. One last suggestion or any sharings we can take. Morning, sir. So I'm Rakesh from ECEL OUTR, formerly CET. So basically, sir, we are focusing on startups rather than uh, any other things. But somehow we are also focusing on personal finance for the students. What we feel is that when students come from school to college life, they are having ample of money to spend, but they don't know how to use or utilize that money. Before that, we are having sessions on personal finance and everything. Other than that, we are having 5 to 6 startups. Some are going in AIC also, and said some are don't have education. So we are trying to like grow them, having some meet with them, and doing the session. Apart from that, sir, we are having partnership with a startup grind, and all that we are like doing the session for the startups also. Well taken. I think we need more sector-focused incubators which would take care of the e-cells that their academic or host institutions would be connected with. But I think that if our objective of building out at least a CT-based ecosystem to sustain all the e-cells is a idea that we are trying to bring out today. Also, as themed under this carnival, that if a student in any college could understand that who do I need to reach out to before I start this entire entrepreneurial journey of mine, for every other need, what in terms of developing a product, developing a service, developing an application, reaching out to the market, how to initiate, if this initial ideas of entrepreneurship are there with the e-cells, or there is a framework which could be worked out, then it would be much easier for these students to start with. They become somehow clueless as they start this entire journey. That's where we meet with more number of cases landing down to failures.
I think that is something, yes, we all need to think together, and we'll definitely discuss on all these issues. So thank you, everybody. I think we would take a more while in order to just complete with the academic for startup session today, and we'll wind up the session for the virtual attendees and joinees here. And as we move forward after a short break, we will also meet again on the on conference roundtable with all the ECs. Thank you so much. सब schools रू join करथिबा सबु head of the institutions तथा New Life Education Trust रो officials मान को बहुत बहुत धन्यवाद. We'll close today's session here, and we'll very soon formulate the entire framework and reach out to you once again. Thank you for this, and बहुत बहुत धन्यवाद once again. Thank you so much. Yes, Devashish, we can stop the streaming and end the meeting.